So today's session, as I have previously said, that today's session is of Microsoft. No, today's session is of Google Form, like how you can create a Google Form. Let me share my screen. Okay. So the screen was shared to you all, and this was a screen of Google Form. Like today's session was dependent on Google Form, and it's our third or fourth session of learning management system. And today we're going to discuss like how we can create a Google Form, or you can say that it's a survey form as well. And usually people used to share these forms in their on their professional sites. Like आपको यहाँ पे usually आपको Facebook पे ये forms मिले होंगे, और and if you want to fill that form, so you we're going to open it through online. These forms are basically used to fill through online platforms like Facebook. आपको Facebook पे normally इस तरह के forms मिले होंगे, so that you can register it as well. We have also created our form through this site, and I'm going to share my form as well as a example, like how we can create a Google form, a professional Google form. So let's start the session. And first of all, you can, if you want to open the Google form, you're going to see this kind of preface. And first of all, you have to fill the heading, like what is your Google form dependent on. Let's see if I can take the example of my program name, like Technolitrate. I can take the example. Okay, so from that you can create any of title you want to create. आप इस तरह कोई भी जो है title आप create कर सकते हैं. Other than this, you have an option of description. Like you can type a description as well, like that will go to explain your title, that will go to explain your whole form. आप यहाँ पे description mention कर सकते हैं. Any description you want to insert, you can type it here. Like I will go to type a small description, like it's a computer related course, or I can mention the contents, topics, graphic designing, Microsoft tools, other than this programming. So इस तरह जो है आप कुछ भी जो है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपको आप यहाँ पे जो है easily अपने जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ मेंशन कर सकते हैं, that will be in their form. Like मैंने यहाँ पे एक सिंपल से एक डिस्क्रिप्शन मेंशन किया है, that are my topics of this course. 1 minute. Microsoft. Okay, so इस तरह जो है आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं, and you can easily and you can easily show your form contents here. Your like description here you can show easily. Other than this, आपके पास यहाँ पे right side बहुत सारे जो हैं, you can see the options. You can avail this in your Google form. Like first of all, I will click on add question. So now my first question would be added, and this question would be consist of multiple choice question as well, a checkbox question as well, drop down. ये बहुत सारे आपको यहाँ पे option mention हो रहे हैं. So let's take an example of multiple choice question. Like यहाँ पे आप कोई भी जो है MCQs जैसे कह सकते हैं, like आप यहाँ पे उसे create कर सकते हैं. Like कोई भी आप example ले लें. Like let's see a computer. What is a computer? Like let's see what is a computer. यहाँ पे जो एक normal simple say question I've typed, and now I'm going to give the 4 option. Computer is a machine, and by clicking on add other option you can create more options, but you cannot create more than 4 options. आप 4 options ज़्यादा create नहीं कर सकते in the question of multiple choice. Second option, I can say it's a food, or it's an animal, or it's a, let's suppose it's a city. Let's take an example. So यहाँ पे जो है इस तरह आप कोई भी 4 options जो आप generate कर सकते हैं, and then the viewer will going to select a one option from this. So इस तरह जो है आप यहाँ पे एक MCQs type जो है question generate कर सकते हैं, which will call a multiple choice question. Okay. Other than this, you can add an image as well. आप यहाँ पे एक image भी insert कर सकते हैं. How? I'm going to tell you. Like आप यहाँ पे कोई भी image insert कर सकते हैं. Let's take it in image, this image, and you can add your image in the Google form. See, the image would be generated here. Okay, so now the image was generated. Like यहाँ पे आप कोई भी image generate कर सकते हैं, जो भी जिस image से आप जो है question पूछ रहे हैं. Like I have asked a question, you can generate a computer image as well. Like मैंने यहाँ पे what is a computer जो question जो है यहाँ पे type किया, so I can give the picture of computer as well, and I can make it pasted as like here. So आप यहाँ पे easily आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये तो ये है क्या, actually चीज क्या है. So this was actually the feature of multiple choice question by inserting image. Other than this, आप जो है इस multiple choice question को you can create it in a form of drop
बॉक्स एज वेल, चेक बॉक्स एज वेल। आप यहाँ पे चेक बॉक्स की पोजीशन के अंदर या फिर टाइप के अंदर आप इसको बना सकते हैं, लाइक हाउ आई विल टेल यू। if we're going to select a checkbox, so now it would turn into checkbox. Like यहाँ पे normally checkbox questions जो होते हैं usually ask not ask a question, they ask your view. like यहाँ पे जो है आपका कोई व्यू पॉइंट पूछा जाता है चेक बॉक्स के अंदर यूजली, या फिर इस तरह भी कभी कभी होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा कोई एक से ज्यादा आंसर दें, देन दे यूज द चेक बॉक्सेस। लाइक अगर जो है यहाँ पे मैं कोई दो ऑप्शन करेक्ट दे दूं, लाइक मशीन और टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट हैं, सो नाउ द व्यूअर विल गोइंग टू करेक्ट इट ऑन मशीन एंड टेक्नोलॉजी। वन मोर, जब भी कोई आंसर होंगे किसी क्वेश्चन के, सो द व्यूअर गोइंग टू यूज द चेक बॉक्स। अभी जो है इस गूगल फॉर्म को एक तरह से मैं क्विज की पोजीशन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, लोग डिटेल्स के लिए, जैसे कि हमने गूगल फॉर्म जनरेट किया था, उसमें जो हमने डिटेल्स मांगी थी, योर ईमेल, योर व्हाट्सएप नंबर, योर नेम, योर ईमेल, योर दीज थिंग्स वुड बी आस्क्ड इन द गूगल फॉर्म। सो in that case we're going to give you the four option and you're going to select any of one option. So checkbox इसके लिए काम में आता है कि आप one more questions को जो है आप one more answers को आप select कर सकते हैं. I have one chat. No Aisha, I haven't received your assignment yet. Kindly try to send it again, or if you can share it on WhatsApp, so you can share WhatsApp as well. Okay. So resume the session. Now we're going to discuss like what is the short answer and paragraph. Normally ऐसा होता है कि एक question है like what is a computer, और इसकी कोई options नहीं है. You have to answer this question in text form. So the creator is going to give you the short answer area or paragraph form area. Like अगर जो है आपका उस question का answer short answer है, so it will going to give you the 2 to 3 lines enough. 2 to 3 lines are enough for a short answer. So एक second मैं इसको remove कर लूँ. Okay, so now I have given you the option of short answer. तो आप यहाँ पे जो है कोई भी short answer you can mention it, but you have to now type the answer. अब आपको कोई options नहीं दी जाएंगे, अब आपको option type करना पड़ेगा. So this was actually the short answer option. This was usually the creator usually gives you the short answer area when he asks you something detail, or when he asks your point of view and you have to give your point of view in a text form. तब जो है आपको यहाँ पे short answer का option दे देता है, और short answer usually 2 to 3 lines, not more than 2 to 3 lines. short answer के लिए 2 to 3 line की space होती है, इससे ज़्यादा space नहीं होती. Okay. Another thing is that we have an option of paragraph as well. Like आप जो है किसी भी question का paragraph form के अंदर भी उसका answer कर सकते हैं. Like how if you're going to create a paragraph, so now you're going to get a more space as compared to short answer. Now you can answer a whole paragraph as well, or you can write essays as well. अब आप यहाँ पे बहुत लेंदी आंसर्स या बहुत लेंदी ऐसे फॉर्म में या कोई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप यहाँ पे अपने आंसर्स मेंशन कर सकते हैं इफ यू गोइंग टू गेट द ऑप्शन ऑफ पैराग्राफ. सो यहाँ पे जो है पैराग्राफ area, short answers, multiple choice, and checkbox are the 4 options. Usually, the creator will going to provide you at when he was creating a quiz for you, or if he was creating a form that want your information, so they use these 4 areas. इसके अलावा जो है हमारे पास ड्रॉप डाउन ऑप्शन है. Okay, if you're going to click on drop down option, you're going to get the 4 options. Like आपको यहाँ पे 4 आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दी जाएंगे, और आप यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. तो ड्रॉप डाउन ऑप्शन and MCQs or multiple choice option are both are actually same. Okay, so now we'll have one more option, like आप यहाँ पे file upload option. If the examiner is going to give you the file upload option, so this will going to appear. Like what is this? File will be uploaded to the form owner's Google Drive. Okay, अभी जो है मैं एक तरह से यहाँ पे ओनर हूँ. If I will going to switch to viewer, see, if I want to switch the viewer, like अब जो है एक तरह से मैं व्यूअर फॉर्म में आ चुका हूँ. अब आपको जो यहाँ पेज आपको यहाँ शो हो रहा है, ये व्यूअर को शो होगा. सो नाउ व्हाट इज अ कंप्यूटर? आई हैव मेंशन अ क्वेश्चन एंड नाउ यू हैव एन ऑप्शन ऑफ चूज. लाइक अब जो है आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2. आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. हाउ? लेट्स सी. आप जो है यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस जो है जो मैं आपको यहाँ मेंशन करूंगा, then you will going to get the 2 options. Like यहाँ पे आपको मैंने जैसे कि बताया था ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है. So option 1 is machine, second option is food. So यहाँ पे एक ऑप्शन करेक्ट एक ऑप्शन गलत है, and if you will going to switch to viewer, so आपको जो है यहाँ पे इस तरह को शो हो रहा होगा. Like आपको यहाँ पे इस तरह जो है you can receive a question like what is a computer, and then you have to choose machine or food. I choose machine, and then I will going to click on submit. So this are normally you will going to answer in this form, Google form.
Move on. Now we're going to have these options like multiple choice grid, checkbox grid and linear scale. यहाँ पे normally क्या होता है मैं आपको भी दिखाता हूँ. If you're going to choose a multiple choice grid, so यहाँ पर जो है आपको 4 rows and 4 columns mention होंगे, and you have to this usually give the creator usually provide this area because if he want more than your answers, or if you want to match the option from raw to column, so in this case he will going to give you the option. Like यहाँ पे मैं आपको 4 options इसके what is the computer के 4 जो है options मैं आपको देता हूँ. Like first is food, machine, it's you can say that it's a city, or it's an app, it's an app, it's an application. So यहाँ पे जो है आपको 4 option यहाँ पे दिए गए हैं, and same option will going to give you here as well. So यहाँ पे आप easily जो है matching के लिए आपका ये बहुत ज़्यादा it's a very beneficial for you to match the things. Like अब यहाँ पे same जो है option दी जाएंगे, but यहाँ पे आपको resemblance करके दे देंगे, मतलब यहाँ पे आपको different form में देंगे कि mix up करके. Like food है ना, तो इसके आगे machine, machine के आगे food, it's an app and it's a city. So अब जो है यहाँ पे 4 options, 4 rows and 4 columns are given in front of you, and the options are jumbled up. Like now you have to match the options. Like अब जो है viewers जो है इसको match करेंगे, like food, so he will going to click on, like, select this option, and then it's a machine, so he will going to select the machine in the column. So इस तरह जो है it's a easy to do a matching. It's a easy for the matching purpose, which is multiple choice grid. Multiple choice grid usually जो है वो matching के काम में आता है. So other thing is that we have the checkbox grid as well. Like how same way we have done the matching area, like जैसे कि multiple choice grid होता है, वैसे ही checkbox grid भी होता है. Now you will go into answer 2 or more question. Like अब जो है normally यहाँ machine है ना, so I will going to put machine in a 2 areas. Like मैं अब यहाँ से food को skip करके यहाँ पे machine mention करूंगा. So now अब आपको जो है यहाँ पे आपको 2 जो है वो सेम आंसर्स जो है मेंशन होंगे, एंड देन यू विल गोइंग टू क्लिक ऑन बोथ द ऑप्शन. जब भी कभी आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 आंसर्स हैं, चाहे वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो, या आपको चेक बॉक्स फॉर्म में पूछा गया हो, या आपको ग्रिड फॉर्म में पूछा गया हो, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन के 2 आंसर्स होंगे, देन द क्रिएटर विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द चेक बॉक्सेस. सो चेक बॉक्सेस आर यूजुअली used in this case. Other thing is that you're going to have the date and time as well. So like date, you can mention it here. Like यहाँ पे जो है अगर आपको कोई भी चीज, यहाँ पे कोई भी अनाउंसमेंट यूजली होती है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ यू वांट टू रजिस्टर द फॉर्म टिल दिस डेट, देन द क्रिएटर विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द डेट, डे एंड मंथ हियर. तो यहाँ पे आपको जो है क्रिएटर यहाँ पे डेट, डे और मंथ जो है यहाँ पे मेंशन करेगा. कि कभी भी अगर रजिस्ट्रेशन डेट की जो डेडलाइन होगी, इट विल गोइंग टू मेंशन इन दी डेट फॉर्म. टाइम भी यहाँ पे यूजली ऐसा होता है कि आपको जो है यहाँ पे टाइम भी मेंशन किया जाता है कि आपको इस टाइम तक जो है क्वेश्चन को जो है अपने जो है फॉर्म को सबमिट कराना. सो दे विल गोइंग टू गिव यू द टाइम एज वेल. डेट एंड टाइम आर यूजली इंपॉर्टेंट इन दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स. अदर थिंग इज दैट यहाँ पे आपको नॉर्मली जो है बहुत जो है वो बेसिक जो है ये चीजें जो है मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं. सो नाउ वी गोइंग टू मूव ऑन दी मोर ऑप्शंस. लाइक यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन जो है वो ही हैव मेंशन. सो व्हाट इज द कंप्यूटर. सो लेट्स मेक दिस अ क्वेश्चन. यहाँ इसको मैं एक क्वेश्चन जो है वो जनरेट करता हूँ ताकि at last we're going to see whole form in a one sequence. Machine, food, it's a machine, food, city और application. So यहाँ पे 4 जो है आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं. So in this form the question will going to be appear. Then we want to move ahead, and in the right side you can see the add question as well. So if I will going to create an add question, a same question will be generated. Like अब जो है जो question पे हम पहले काम कर रहे थे, it will going to get it below the current क्वेश्चन. अब आपको यहाँ पे जो है व्हाट इज द कंप्यूटर जो क्वेश्चन सेकंड पे आपको मेंशन हो रहा होगा. नाउ वी गोइंग टू नाउ वी हैव गेट वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीवियस वन. अब यहाँ पे सेम वे हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर सकते हैं, एंड वी विल गिव मल्टीपल चॉइस एज वेल. वी कैन गिव यू पैराग्राफ फॉर्म एज वेल. लाइक यू हैव टू आंसर अ पैराग्राफ फॉर्म, और यू कैन आंसर शॉर्ट आंसर फॉर्म. लेट्स टेक एन एग्जांपल like what is a machine. Now
what is the machine? Now I'm going to give you the option of paragraph. So now अब आपको जो है यहाँ पे एक long answer text यानी कि एक long form के अंदर आपको यहाँ पे answer mention करना है. Okay, so this how you can create more questions, more you can create more questions in either a MCQ form or the paragraph form. So यहाँ पे जो है इस तरह आप unlimited जो है questions जो है आप create कर सकते हैं. Now moving ahead, ये जो है आपका हो गया section 1. like आप जो है अपने form के sections ही बना सकते हैं. Now if I want to I want more sections, so if I want to click on next question, so now a same question will going to be generated. like अब आप जो है आपको इस तरह जो है 3 questions अब आपको यहाँ पे मिल चुके हैं. so इस तरह आप यहाँ पे बना सकते हैं. अब आप जो है अपने question में how you can edit your question. like आप इस तरह आप if you want to delete your question, you can click on this delete option as well. If you want your question to be answered, it's a compulsory question to be answered in your form, so you can create or you can on this required option click करने के बाद the attempter should be going to answer this question as a permanent form. आपका question आपका जो है वो form submit ही नहीं होगा जब तक आप ये question जो है इसको fill नहीं करते, because this is a required question. We have put a required option on. Other thing is that you can see that three dots are given. You can be created in a description form as well and response validation. ये जो दोनों जो है options जो है usually creator के पास show होंगे. जो creator होगा, जो viewer होगा, उसके पास ये चीजें show नहीं होंगी, because it's a setting option, and setting option cannot be shown in front of viewer. Other thing is that you can import the question as well. like आप कोई भी question अगर है mention आपके पास, तो आप किसी भी previous form से कोई भी question जो है import कर सकते हैं. या मैंने कुछ forms जो है यहाँ पे बनाए हुए हैं, आप इसमें से कोई भी form के जो है question जो है आप इसको ले सकते हैं previous form से related. पर अभी जो है हमें कोई भी previous form का question नहीं लेना. We are going to now we are going to talk about titles and description. like आप जो है अपने form में किसी भी question में title और description add कर सकते हैं. like see in this form. अब अगर आपने फॉर एग्जांपल एक और नया सेक्शन ऐड करना है, जैसे यहाँ देखिए पहला सेक्शन था Technolitrate description and a question. The same way, if you want to add one more title, one more description, so you can create it as well. यहाँ पे आप कुछ भी जो है मेंशन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं AI. so इस तरह जो है आप कोई भी बीच के अंदर यानी in front of your form, in between your form, you can create any of the title or any of the description here. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है कोई भी क्वेरी आपको पूछनी है, so you can ask in the comment box. I noticed that many participants are leaving the session and then joining. I think they have the connection issue, so no problem. I am going to admit them in my meeting. So now if you have any question, you can ask in the chat box. Okay, so now move ahead, and as I have told you, like you can add an image as well in your form. With the image as well, you can add any video as well. like how, wait a minute, I want to show you that how you can add a video as well. You can first of all see that I have add an image. like if you want to ask a question related to image, तो आप यहाँ पे कोई भी image insert कर सकते हैं, and you can ask the question related to image. सबसे पहले जो है आप image का title देंगे, logo of टेक्नोलाइट्रेट. इस तरह जो है आप कोई भी जो है अपनी इमेज का आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं, एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू इमेज. like see, the question was generated between the image, and now I'm going to ask the question, what is the uh, type of this इमेज. like आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं. अपना लोगो से रिलेटेड, पिक्चर से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. आई हैव मेंशनड दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस इमेज. तो आप यहाँ पे एमसीक्यूज फॉर्म में भी आप ऑप्शन दे सकते हैं. आप शॉर्ट आंसर्स की फॉर्म में भी आप यहाँ पे आंसर मेंशन कर सकते हैं, एंड इन अ पैराग्राफ फॉर्म यू कैन आल्सो आंसर दिस क्वेश्चन. So these were the things which we have previously discussed. If we want to move ahead, and we're going to see that you can add an other section as well. like अब जो है फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आपने एक जो है एक फॉर्म जो है आपने बना लिया, आपने जनरेट कर लिया, and now you have to make another section, so you can add another section here. See, now one more section was generated, and we are going to work on another section. like आपका जो है एक सेक्शन खत्म होने के बाद आप अगला सेक्शन पे मूव ऑन कर सकते हैं, and you can give different title, different description, and different question in this second section. Other thing is that you can add a video as well. like आप यहाँ पे कोई वीडियो भी add कर सकते हैं, so that the viewer can see the videos, and then he'll want to answer the video.
So like आप यहाँ पे कोई भी वीडियो आंसर कर सकते हैं, like Technolitrate, if I go to search it, so I think that you're going to get the videos. यहाँ पे आपको जो है previous sessions की बहुत सारी जो है video you can see in this साइट. यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है वीडियोस मेंशन होते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर रीसेंट वीडियो व्हिच वाज प्रीमियर टुडे. ये वीडियो जो है आज ही प्रीमियर हुई है, क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, रिज्यूम एंड ब्राउजर. सो वी कैन इंसर्ट दिस इमेज और वीडियो. So now see the video was inserted in the question bar. अब यहाँ पे वीडियो जो है insert हो चुकी है. Now the person who was attempting the form, he can see the video, and if you have given the answer in the video, so he will going to listen the video, he will going to watch the video, and then he will going to answer the questions. And you can also give the title of this video like how to create letter. So इस तरह जो है आप कोई भी अपनी वीडियो का टाइटल दे सकते हैं, एंड दी यू कैन शो द वीडियो इन बिटवीन योर फॉर्म एज वेल. Okay, so now we have 8 minutes remaining, and I want to show you one thing. Like अब मैं आपको ऐसा आपको जनरेटेड फॉर्म शो करता हूँ, like जो हमने पहले से जो है बनाया हुआ था. So we'll go to show you our generated forms. यहाँ पे आपको हमारा टेक्नोलाइट्रेट जो प्रोग्राम है उसका जो है यहाँ पे फॉर्म नजर आ रहा होगा, टेक्स्ट साइट प्रोग्राम फॉर्म. इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, इफ आई वांट टू शो यू हाउ आई हैव मेड दिस फॉर्म. सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव इंसर्ट दिस लोगो. लाइक सबसे पहले जो है हमने इमेज इंसर्ट की, टेक्नोलाइट्रेट स्टेप टू सक्सेस. दिस वाज एन इमेज ऑफ आवर form. Then I have give the heading text site. I have given the heading, and then I have given the whole description, like what is my program, and what is my Facebook page, WhatsApp number. These all information I have given. Then I have given the option of email. Like मैंने जो है उसके बाद एक क्वेश्चन मेंशन किया ईमेल का, एंड देन आई हैव गिव यू द ऑप्शन ऑफ शॉर्ट आंसर ऑप्शन. लाइक यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना मेंशन करना होगा ईमेल, because it's a compulsory. The thing is that आपको जहाँ जहाँ पे ये red spot, the symbol was showing that it was a required question that should be attempted by the viewer. आप यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको valid email ID जो है यहाँ mention करनी है. Then I have give some instructions like how I have created this instruction form. I have just create a new question. मैंने एक simply एक new question जो है वो create किया. I have give the heading instruction, and then I have mentioned the whole instruction here. How ये जो है मैंने short question जो है मैंने जो है लिया है descriptive form जो है option मैंने choose किया, so that I can mention the description over here. यहाँ पे मैं आपको description mention कर सकूँ. And then I have started creating my form. Like first question I have give you your email ID, and then I have give you the option of short answer text. Simply मैंने आपको यहाँ पे mention किया your email ID, and then I have give you the short answer option, and then you have to mention your email ID. And this is not a required question, that's why I have not opened the required option. And then the second question I have give you the first name, like you have to mention your first name. And here as well I have given you the option of short answer. I haven't give you the option of multiple choice or paragraph or checkbox. I've simply give you the option of short answer because the name are usually short. The first name, last, the names are usually short, so that's why I'm giving the option of short answer text. But this time I have opened the option of required because this question must be required in this form. Then move ahead, and then I have give you a third option, which is the last name. That's mean your second name. I have give you the option of short answer text. Here as well, I've put this question a required question because I've given you, I have opened the required option on. यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे शो किए हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एंड दी बोथ क्वेश्चन आई हैव गिवन द शॉर्ट आंसर टेक्स्ट, एंड दी बोथ आर द रिक्वायर्ड क्वेश्चन फॉर दिस फॉर्म. Then I give you the age, and same thing I do here as well. Like age is this question is a required question, and I have give the short answer text. Then I have given you the fifth question. I have made the contact number WhatsApp, and then I have give it as well a same as I have previously said, short answer text, and it's also a required question. So इस तरह जो है मैंने different questions जो है बनाए. Address I have mentioned, like आपको यहाँ पे address mention करना है, and I have also given it short answer text, and then I have given you the name of institution, like where are you studying or where are you teaching. So here as well I have make this question required, but this time I have given it the long answer text because normally institution or campus होते हैं वो long font में आते हैं. The text, the name should be the names normally would be in a long font, so that's why I given the option of paragraph option, not a short answer option. So इस तरह जो है आप different
क्वेश्चन जनरेट करके उनके डिफरेंट आप टेक्स्ट जो है वो आप डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर रिसीविंग योर आंसर. इफ यू वांट योर आंसर टू बी रिसीव इन अ पैराग्राफ फॉर्म, सो यू कैन चूज अ पैराग्राफ एज वेल. और इफ यू वांट योर आंसर टू बी रिसीव इन अ शॉर्ट आंसर फॉर्म, सो यू कैन select the short answer. Or if you want your answer to be in a multiple choice, so you can choose a multiple choice option as well. Then at last I have select the voucher promo code if you have provided by your institution. So इस तरह जो है मैंने इस क्वेश्चन को भी लॉन्ग आंसर टेक्स्ट में जो है वो mentioned किया है. And the second last question I have given that in a concise manner, tell us why you are willing to join this tech camp. इस एक तरह से normally question है that was actually asked to get your views, like ये question जो है इसीलिए पूछा गया है कि आपके जो है views ले सकें कि आप क्यों इस tech camp को join करना चाहते हैं. And here I have give this a long question text option here, like in a paragraph form I want this answer, and this is also a required question. So at last I have given you a I can say that it's a multiple choice question. Like यहाँ पे जो है मैंने एक multiple choice question आपके लिए generate किया है. अभी तक जो है ऊपर तक जितने भी questions थे वो सब short answer text और paragraph form के answers थे. But now at last I have given you the option of multiple choice. Like you can choose any of the option from it. Like I have asked a question: are you willing to complete this virtual program with 100% attendance? And I have given you the option of 3 options: yes, no, or maybe. So this how you can create your Google form, and then you can give you the option of multiple choice as well. आप यहाँ पे multiple choice question का भी option जो है वो आप दे सकते हैं in between your form. इस तरह जो है ये मैंने form create किया है, and then I have shared a link through the WhatsApp or Facebook pages. I've pasted the link, and I've shared to many professional sites so that the people will going to interact with this form. इस तरह जो है आप नॉर्मली गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं. ना सिर्फ गूगल फॉर्म बल्कि यूजली सर्वे भी इस पे ही क्रिएट किए जाते हैं. एंड अदर थिंग इज दैट यू कैन गिव अ डिजाइन एज वेल. वी हैव 2 minutes remaining, so I can tell you the designs. लाइक आप यहाँ पे बहुत सारे आपको थीम कलर मेंशन हो रहे होंगे. कुछ तो आपको रिकमेंड किए गए हैं, कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कलर आप मेंशन कर सकते हैं. बैकग्राउंड कलर भी है, ग्रे है, यहाँ पे मीडियम है, लाइट है. सो दीज आर एक्चुअली फॉन्ट कलर व्हिच यू कैन यूज to make your form interactive. And other thing is that font style was also given. Like मैंने यहाँ पे basic font style जो है choose किया है. I haven't choose a formal or a decorative or joining font. I've usually select a basic font. And if I let's take decorative form. So how it will look like? See, अभी जो है मैंने डेकोरेटिव फॉन्ट जो है मैं सिलेक्ट करा, और सी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सब डेकोरेटिव फॉर्म में आ चुके हैं. इस तरह आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं अपने फॉर्म का. अदर थिंग इज दैट यहाँ पे जो है मैंने इमेज अपलोड की हुई है. आप यहाँ पे कोई और भी अपनी हेडर के तौर पे कोई भी इमेज भी अपलोड कर सकते हैं. वेयर आई विल अगेन टेल यू, आप यहाँ पे कलर ऑप्शन आपको यहाँ पे मेंशन होगा. आप यहाँ पे जाके कोई भी अपनी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर वगैरह कुछ भी आपको सिलेक्ट करना हो, यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर, दिस कस्टमाइज थीम ऑप्शन. Other thing is that you're going to then if you move ahead, so you can see that it's a response option. यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मेंशन होंगे, यहाँ पे किस किस का आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है. इंडिविजुअल रिस्पॉन्स यू कैन चेक एज वेल, क्वेश्चन रिस्पॉन्स यू कैन चेक एज वेल. यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे रिस्पॉन्स शो होंगे. अदर थिंग इज दैट यू हैव अ सेटिंग एज वेल, and you can do you can change a setting of a form as well. Okay, so now less than 1 minute is remaining, so the recording would be uploaded on YouTube as well. And you can and I want, again I'm requesting you all that kindly submit your homework on time. Previous homework, those who have not submitted the previous homework, so kindly submit it in this weekend. Yes, I'm giving you the time of this weekend. Sunday तक जो है आप लोग जितने भी previous जो homework है वो आप submit कर सकते हैं Google Classroom पे, यहाँ पे email पे. Okay, thank you so much everyone. I hope this session would be very productive for you all. Thank you so much. If you have any query, you can ask in the WhatsApp because we don't have time to check your queries. Less than 1 minute is remaining. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.